Hi, this is Lal Ismail. आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर which is called relations and functions, जिसके टॉपिक्स है इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, रेंज एंड डोमेन। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे बेसिक टू एडवांस, सब क्वेश्चंस करेंगे इस पर। क्या होता है इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, W S S R। W means right, S means swap, and S means swallow, R means replace। ये आपको याद रखना है, WSSR, राइट, स्वेप, सॉलो, रिप्लेस। मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको फिर समझ आएगा फिर कैसे करना है इस कंसेप्ट को यूज to solve the questions of inverse function। Swap, solo, replace, replace। पहला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, f of x equal to 2x plus 3, 2x plus 3। क्या करना है, हमें लेट y equal to 2x plus 3। क्या करना है दूसरा, ये पहला स्टेप है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, राइट। नाउ swap x is equal to 2y plus 3। now solve for y, x minus 3 is equal to 2y। डिवाइड बोथ साइड्स, मुझे इस टू को एलिमिनेट करना है, कैसे मैं इसको एलिमिनेट कर लूँ, 2 को बोथ साइड्स में डिवाइड कर लूँ, तो डिवाइड 2 दिस एंड दिस गोस y इक्वल टू डिवाइड 2। ये इसका आंसर, y इक्वल टू, और इसका मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y, और ये भी लिख सकते हो f of x इनवर्स इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये भी लिख सकते हो। पहले क्या करना है, राइट, फिर स्वैप, फिर सॉल्व, फिर रिप्लेस करना है। आपको याद रखना है इनवर्स फंक्शन, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। Now question number 2 is, now question number 2,
f of x, this is intermediate function, equal to x square, f of x is greater or equal to 0, इसका हमें इनवर्स निकालना है। ऐसे हम इसका इनवर्स क्या निकालेंगे, that y equal to x square, square both sides, squaring both sides, this and this and this goes, y square equal to x. Now squaring both sides again, this and this goes, y equal to under root x. ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। Now question number 3 is advanced. Question number 3 क्या बोल रहा है? Question number 3 बोल रहा है f of x equal to x minus 1 divided by x plus 1. इसका आंसर सॉल्यूशन क्या है? कैसे करना है? लेट y equal to x minus 1 divided by x plus 1. हम क्या करेंगे? हम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y x plus y is equal to x minus 1. Now bring like terms together. Yx minus x is equal to minus 1 minus y. Now take common x here. 1 y minus 1 is as it is, equal to minus 1 minus y. Divide both sides by y minus 1, y minus 1. This then goes, x is equal to minus 1 minus y divided by y minus 1. Now replace y equal to minus 1 minus x divided by x minus 1. Now ये भी है इसका आंसर, और f of x inverse equal to 1 plus x divided by x minus 1. ये भी है इसका आंसर। ये जो माइनस है, माइनस साइन ये 3 जगह मूव होता है, डिनोमिनेटर में, आउटसाइड में और इनसाइड में। इसका आंसर ये भी हो सकता है, देखो कि अगर हम इसको अंदर कर सकते हैं 1 प्लस, अगर हम इसको बाहर माइनस को आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस, ये बनेगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये इसका आंसर। This was all about inverse functions. Now move to composite function.
composite function. What is composite function? Composite function. Function inside another function. Composite function is function inside another function. Function inside another function. Suppose ये function है और इसके अंदर और एक g of x है. This is another function. F of x is one function. G of x is another function. इस जीरो का मतलब है फंक्शन अगर ये डॉट होता तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब है कंपोजिशन. इस स्मॉल सर्कल का मतलब है कंपोजिशन. इसका मतलब है कंपोजिशन. हम क्वेश्चन करेंगे क्या होता है कंपोजिट फंक्शन. फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन. Now question number 1 is f of x equal to x plus 1. G of x is equal to x square. Find f of g of x. कैसे हम इसको फाइंड करेंगे. पहले हम आउटसाइड फंक्शन को सेम रखेंगे. इनसाइड फंक्शन क्या है g of x square ऐसे लिखेंगे which is equal to आउटसाइड फंक्शन क्या है. आउटसाइड फंक्शन इज f. x इस x का वैल्यू किसके बराबर है x स्क्वायर 4 प्लस 1. ये है इसका आंसर. इस x के बदले में पुट करना है इस x आउटसाइड फंक्शन के x के बराबर को. वही है इसका आंसर. अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे. Let us go for second question. Question 2 is f of x equal to 2x. G of x is equal to x plus 3. X will find g of f of x. इस क्वेश्चन में g आउटसाइड है. g भी एक फंक्शन है, f भी एक फंक्शन है. इस क्वेश्चन में g आउटसाइड है, f इनसाइड है. हमें रूल को सेम फॉलो करना है. पहले हम इनसाइड फंक्शन को लेंगे फिर आउटसाइड फंक्शन को लेंगे. ऐसे देखो सॉल्यूशन g of f of x क्या है. व्हाट इज f of x? 2x which is equal to g of x किसके बराबर है. इस x का वैल्यू किसके बराबर है 2x और प्लस 3 है अपना. ये है इसका आंसर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now move to question 3rd. Now question number 3rd is what is question 3rd? F of x equal to root x comma g of x equal to x square plus 1. X square plus 1. Find f of g of x. Find f of g of x. Solution. f of g of x क्या है x square plus 1 which is equal to f क्या है root
x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लास्ट क्वेश्चन है इनवर्स कंपोजिट फंक्शन का, एडवांस्ड जी डबल ई का क्वेश्चन है। सॉरी अभी क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फोर्थ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जी ऑफ एक्स इक्वल टू x minus 1, x minus 1, find f of g of x, find f of g of x। कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, f of g of x क्या है, x minus 1 which is equal to आउटर फंक्शन क्या है f of x इक्वल टू किसके बराबर है x minus 1, इसका स्क्वायर है, सब में स्क्वायर लग जाएगा और प्लस 1, यही इसका आंसर, यही इसका आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका और कंपोजिट फंक्शन। ये जी डबल ई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एफ को हम एज इट इज रहेंगे, जी ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू आउटर फंक्शन क्या है 1 डिवाइडेड बाय इस एक्स के बदले में क्या है एक्स स्क्वायर और क्या है यहाँ पर प्लस 1, ये इसका आंसर, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट कंपोजिट फंक्शंस। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने 2 4 किए, 5 क्वेश्चन किए इसके। अब है नया टॉपिक डोमेन एंड रेंज, यानी हम रेंज के क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में डोमेन के क्वेश्चंस करेंगे।
range or a range. What is range? Values of y. Values of y. Question number one. Now question one is f of x equal to x divided by x square plus वन. हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको डोमेन के रिस्ट्रिक्शन से सॉल्व करेंगे. डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस क्या है? Denominator should not be equal to 0. Let y equal to x divided by x square plus 1. X square plus 1. Denominator रूट समथिंग. ये डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस है. डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस में बताऊंगा पहले आपको. डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस अंडर रूट समथिंग greater or equal to 0. Denominator should not equal to 0. Numerator is always defined. It should not be undefined. हम कैसे करेंगे? हम इसको हम log inside log something greater than 0. ये रिस्ट्रिक्शंस हम फॉलो करके हम रेंज को निकालेंगे. Range is actually values of y. Domain is actually values of x. Allowed values of x. कैसे करेंगे इसको? पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. y(x square plus y equal to x. Bring like terms together. y(x square minus x plus y equal to 0. ये बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसका हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होता है. डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? b square minus 4ac. इसी के फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे? हम टेक a equal to y, b equal to -1, c equal to y. Now b square, what is b square? 1 minus 4, 1 minus 4, what is a? Y, c, y square, 1 minus 4 ac. हम is greater or equal to 0. हम इसको यहाँ से इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे. हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे हम इसको?
One, bring this 4y square to another side. 1 square are equal to 4y square. Now divide both sides by 4. This and this goes. 1 divided by 4 liter are equal to y square. Now squaring both sides. This and this goes. This and this goes. This becomes plus minus 1 divided by 2 minus 1 divided by 1 divided by 2. So हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे -1/2 को इंक्लूड करेंगे और 1/2 को इंक्लूड करेंगे। ये है क्या है? ये रेंज ये इसका रेंज है। आप इसको चेक भी कर सकते हो यहाँ पर। टेक y square equal to -1/2 1 minus 4 into -1/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 1 minus 4 into 1 divided by 4 4 and 4 cancel 1 minus 1 is 0. सो हमारी जो कंडीशन थी डोमेन की वो ठीक है। इसका जो रेंज है वो निकल गया। इसका जो रेंज है वो निकल गया -1/2 1/2। Now move to second question. इसके और भी मेथड से इससे हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। कैलकुलस से भी इसको हम सॉल्व कर सकते थे यू बाई बी मेथड से, मगर वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, मगर दिस वाज द सिंपल वन। दिस मेथड वाज द सिंपल वन। Now going to second question. क्या है second question? क्या है? Question number second is f of x equal to f of x is equal to x plus 1 over x. Let y equal to x plus 1 over x. ये क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके y equal to x square plus 1 divided by x. y x equal to x square plus 1. Now bring like terms.
together. सॉरी, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। That t equal to x, y equal to t plus 1 over t. Now cross multiply, yt is equal to t plus 1. Bring like terms together, yt minus t is equal to 1. Take t common, take t common, t y minus 1 is equal to 1. Divided both sides by y minus 1 divided by y minus 1. Now check for denominator. Denominator should not be equal to 0. Uh, numerator is defined. So we check for denominator. Y equal to 1. So our range is all real numbers, numbers, real numbers, except 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 one, except one. हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, all real numbers except one. Now question number third. Now question number third. Now question number third is f of x equal to x square plus 1 divided by x square plus 2. यहाँ पर भी x square है, यहाँ पर भी x square है. हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं.
Let P is equal to x square. Y it becomes y equal to t square plus 1 divided by t square plus 2. हमें पता है x square is greater or equal to 0. T square is greater or equal to 0. T square is also greater or equal to 0 क्योंकि डोमेन के रेस्ट्रिक्शंस है. डोमेन के रेस्ट्रिक्शंस डोमेन रेस्ट्रिक्शंस डोमेन रेस्ट्रिक्शंस हम क्या करेंगे y इक्वल टू e प्लस 1 डिवाइडेड बाय t plus 2. Now cross multiply. Now cross multiply. Yt plus 2y is equal to e plus 1. Now bring like terms together. Yt yt minus t is equal to 1 minus 2y. Take t common, y minus 1 equal to 1 minus 2y. Now divide both sides by y minus 1 divided by y minus 1. This sign just goes t equal to 1 minus 2y divided by y minus 1. अब हम क्या करेंगे इसको इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे. डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस के साथ करेंगे सॉल्व इनइक्वालिटी दैट आर इक्वल टू 0. न्यूमरेटर को अलग चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग चेक करेंगे. फिर हम उन दोनों वैल्यूज को जो y की वैल्यूज है उनको इंक्लूड और एक्सक्लूड करेंगे. जो जो इंक्लूड होगा वो इंक्लूड करेंगे, जो नहीं होगा उसको एक्सक्लूड करेंगे. Bring this 2y to another side. This becomes positive. Greater or equal to 2y. Divide to both sides. Y equal to 1 by 2 and 1. इसको हम इंक्लूड करेंगे. y is equal to 1. इसको हम एक्सक्लूड करेंगे. इंक्लूड का साइन ये है जिस वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे और 1 को हम एक्सक्लूड करेंगे. एक्सक्लूड करेंगे जिसका साइन है ये ब्रैकेट, स्मॉल सिंपल ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड का साइन है और जो जो सर्कल ब्रैकेट है और जो स्मॉल जो ये ब्रैकेट है ये एक्सक्लूड का सिंबल है. ये है इसका आंसर. दिस इज द आंसर. दिस इज रेंज. दिस इज द रेंज. Now question 4 please.
क्वेश्चन फोर्थ क्या है? क्वेश्चन फोर्थ इज f of x equal to 2x minus 1 divided by x minus 1, x minus 1. Let y equal to 2x minus 1 divided by x minus 1. Now cross multiply. Yx minus y is equal to 2x minus 1. Now bring like terms together. Yx minus 2x is equal to minus 1 plus y. Now take common x, take common x. Now take x common, which is y minus 2 equal to minus 1 plus y. Divide both sides by y minus 2, y minus 2. x is equal to this. अब हम इसको इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे. bring this one to another side, this becomes 1 equal to 1. इसको हम इंक्लूड करेंगे. bring this one, bring this 2 to another side, this becomes plus 2. इसको हम एक्सक्लूड करेंगे. इसको हम एक्सक्लूड करेंगे. यही है इसका आंसर. 1 को हम इंक्लूड करेंगे, 2 को एक्सक्लूड करेंगे. और इसका आंसर ये भी है, ये भी है इसका आंसर. कर्ली ब्रैकेट्स में 2, कर्ली ब्रेस ब्रैकेट्स में 2. All real numbers except 2. All real numbers except 2. Now last question. इसका last question है इसका. इसका जो रेंज है वो है 1 2. Now question number 5 on range 5. f of x equal to x square minus 1 divided by x square plus 1. हम यहाँ पर भी x square है, यहाँ पर भी x square है. हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं. Let t equal to x square, y becomes t square minus 1 divided by t square plus 1. Now apply Roman restrictions. X square is greater or equal to 0, t square is also greater or equal to 0. Y becomes y equal to t minus 1 divided by t plus 1. Now cross multiply. Yt
plus y equal to t minus 1. Bring like terms together. Yt minus t equal to minus 1 minus y. We take common t, ty minus 1 is equal to minus 1 minus y divided by y minus 1. This and this goes t equal to minus 1 minus y divided by y minus 1. इसको हम इनइक्वालिटी से चेक करेंगे. अप्लाई डोमेन रिस्ट्रिक्शंस. इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. y की वैल्यू ढूंढेंगे. Bring this y to another side. Y becomes minus 1. इसको हम इंक्लूड करेंगे. डिनोमिनेटर को अलग चेक करेंगे. डिनोमिनेटर y is equal to 1 और इस 1 को एक्सक्लूड करेंगे. इसको यही है इसका आंसर. ये है रेंज इसका. ये है इसका रेंज. अब है डोमेन. This domain allowed values of x. What you get in, what you get out. This is domain. Allowed all possible values of x. Domain. Domain allowed values of x. Restrictions. Denominator. Denominator not equal to 0. Log inside. Log something greater than 0. Under square something under root something
something greater or equal to 0, greater or equal to 0. ये आपको याद रखना है. Now move to the questions. Now move to the questions. Question one is f of x equal to 1 divided by x minus 2. X is equal to 2. X is equal to 2. X should not equal to 2. X should not equal to 2. So domain is all real numbers except 2. All real numbers except 2. इसका मतलब है domain is all real numbers except 2. इस करली ब्रेस में जो भी नंबर होगा उसका मतलब है एक्सेप्शन, उस नंबर की एक्सेप्शन. ये हो गया पहला क्वेश्चन. सपोज अगर हम ये x निकल गया 2 के बराबर, 1 डिवाइड बाई x माइनस 2, x के बदले में हम पुट करेंगे 2 माइनस 2, 1 डिवाइडेड बाई 0 बन जाएगा. दिस इज अनडिफाइंड. Now question number 2. Question number 2 is f of x equal to square root of x minus 3. Square root of x minus 3. Now apply conditions square root and square root inside something greater or equal to 0. X is equal to 3. X equal to 3. 3 minus 3 equal to 0. Now 3 minus 3 is 0. The domain is domain is थ्री को हम इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी को पॉजिटिव को इंक्लूड करेंगे. सॉरी गलत हो गया. 3 को हम इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करेंगे.
इन्फिनिटी आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसे, क्योंकि वी कैन नॉट रीच टू द इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, हम इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं। Now question third is f of x equal to 1 divided by x square minus 4, x square minus 4. Now bring this 4 to another side, x square is equal to 4, x square equal to 4, x square equal to x square. Now squaring both sides, this side is x is equal to 2, x is equal to 2. So x should not equal to 2. Domain क्या है? Domain है all real numbers except 2, all real numbers except 2. All real numbers except 2. इस 2 में क्या आएगा? नेगेटिव 2 की, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, वो उसको बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा उसको प्लस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 तो +2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड +2. Now question fourth. Question 4 is log of x minus 1. Now bring this 1 to another side, this becomes 1 greater than 0. So हम इसको इंक्लूड, डोमेन क्या आएगा? डोमेन इज, हमें पता है लॉग के रिस्ट्रिक्शंस, डोमेन के रिस्ट्रिक्शंस लॉग में क्या है? लॉग इनसाइड ग्रेटर देन 0. 1 को हम इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करेंगे. Now question 5 is, now question 5, last question of this domain. F of x equal to, f of x equal to square root of x minus 1, square root of x minus 1 divided by x minus 2, x minus 2, x is equal to 1, x is equal to 1. इसको हम इंक्लूड करेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, x is equal to 2. इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, 1 को हम इंक्लूड करेंगे, 2 को एक्सक्लूड करेंगे. यही है इसका आंसर, यही है डोमेन इसका. 1 को इंक्लूड करेंगे और 2 को एक्सक्लूड करेंगे.
If you like my video, give the reason.